वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज 6 जुलाई और आज हम लोग देखेंगे 6 जुलाई को द हिंदू में आए हुए कुछ न्यूज का एनालिसिस. दोज एनालिसिस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर प्रिपरेशन. तो विच आर द आर्टिकल्स विच आर मेकिंग द हेडलाइंस फॉर अस. तो पहला, जैसा कि थंबनेल पे आपने देखा होगा, द प्रॉब्लम ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग. मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट में ये कंक्लूड किया है कि दिस inhuman practice of manual scavenging has been eliminated from India. So exactly what is the issue, वो हम लोग चेक करेंगे. एक सेकंड इम्पोर्टेंट है, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के अंतर्गत उड़ीसा गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च किया है, मो जंगल जामी योजना, माय फॉरेस्ट लैंड. तो जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स है उनको उनके इंडिविजुअल और कम्युनिटी राइट्स देने का प्रयास इसमें किया गया है, तो वो भी हम लोग देखेंगे. तो लास्ट में अभी जो एससीओ समिट कंक्लूड हुआ है न्यू दिल्ली में, तो उसके लिए एक एडिटोरियल आया हुआ है द हिंदू में. So what exactly the positives and negatives of this SCO summit, with its facts from the basic, that we are going to cover in this whole session. So let's get started. First, with a positive thought. Success is not the final. Failure is not the fatal. It is your courage to continue that counts. मतलब अगर सक्सेस आ जाए तो वो भी कभी फाइनल नहीं होता है. फेल्यूर आ जाए तो वहां से, दैट इज नॉट द लास्ट थिंग, बट द मैटर इज how you are going to face the failure and success. And even if you have a failure, you continue to proceed for your success. That matters a lot, that counts a lot. एक important विंस्टन चर्चिल का thought था, I need to share with you, or so I just put it. So let's get started with the first article, aid of manual scavenging. तो हाल ही में जो CMC है, सेंट्रल मॉनिटरिंग कमिटी ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री, तो उसने कंक्लूड किया है कि all the unsanitary latrines have been made sanitary under the Swachh Bharat Abhiyan, and very important that the problem of manual scavenging is eliminated. So this is a very strong statement from Central Monitoring Committee कि मैनुअल स्कैवेंजिंग जैसी जो इनह्यूमन प्रैक्टिस है, जो inhuman practice that has been eliminated from the India. Okay, so what exactly the issue is? About 508 districts. So if you consider the total district number, that is of 766 in India, उसमें से 508 districts have declared themselves as a free from this inhuman practice of manual scavenging, and that is quite a huge number. And government, on the contrary, ministry जो social justice का है, which is confident that कि August 2023 तक India will declare all the states to be manual scavenging free. So what exactly उसके लिए क्या क्या efforts किए गए थे past में, that we are going to cover. So it reviewed the implementation of prohibition of employment as a manual scavengers and their rehabilitation act. तो ये जो एक्ट है 2013 का, ये एक्ट का एग्जैक्ट इम्प्लीमेंटेशन कैसे हुआ है वो भी सीएमसी ने रिव्यू किया है, दैट इज सेंट्रल मॉनिटरिंग कमिटी ऑफ सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री. वो एक्ट क्या है एग्जैक्टली, दैट वी आर गोइंग टू कवर ओवर हियर. दैट अंडर द प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज अ मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड रिहेबिलिटेशन एक्ट 2013, उसके तहत मैनुअल स्कैवेंजिंग इज टोटली बैन इन इंडिया. Manual scavenging is banned in this country, and there is a requirement for the formation of State Safai Karmachari Commission, State Monitoring Committee, and a District Vigilance Committees. ये important provisions है 2013 के एक्ट का, that is Prohibition of Employment as a Manual Scavengers and Rehabilitation Act. उसके अलावा एक स्वच्छता अभियान मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया था, which is launched to report the instances of manual scavenging in real time. And ministry has concluded कि इस ऐप की वजह से
जो रियल टाइम में मैनुअल स्कैवेंजिंग था वो बहुत कम हुआ है और उसके केसेस बहुत सारे कम हुए हैं। उसके अलावा जो मिनिस्ट्री की तरफ से कहा गया था कि टू इंश्योर द जीरो डेथ्स ड्यू टू hazardous cleaning of the sewers and septic tanks, an integrated scheme of Namaste has been launched. ये स्कीम बहुत इम्पोर्टेंट है। In 2022 this scheme has been launched, नमस्ते स्कीम। तो एग्जैक्टली ये स्कीम कैसे है? Namaste is an acronym for National Action for Mechanized Sanitation Ecosystem, that is NAMSTE, that is Namaste. So आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि मैकेनाइज सैनिटेशन के इसके ऊपर ध्यान दिया गया। तो एग्जैक्टली ये स्कीम जो है 2022 में शुरू किया गया था टू इंश्योर दैट देयर शुड बी अ जीरो डेथ ड्यू टू दिस सीवर क्लीनिंग एंड सेप्टिक टैंक। तो उसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है? As a central sector scheme, this has been launched in 2022 under the Ministry of Social Justice and Empowerment. तो उसके ऑब्जेक्टिव्स अगर देखा जाए तो फर्स्ट इज जीरो फर्टिलिटी। तो देयर शुड नॉट बी एनी डेथ और एनी मिसहैपनिंग ड्यू टू दिस septic tank cleaning or this manual scavenging. So zero fatalities in the sanitation work in India. All sanitation work is performed by unskilled worker. On the contrary, by mechanized system. अगर skilled worker mechanized system available है तो mechanized system. If not, then the skilled worker they have been provided with proper clothing and protective clothing. We can say that then no sanitation workers comes in direct contact with the human fecal matter. So there should not be a direct contact. That is what this Namaste scheme has to say about. All sanitation workers should be collectively enrolled in some self-help group so that they can have their voice as well. तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स है नमस्ते स्कीम का। तो एग्जैक्टली ये स्कीम्स हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? GS1 सोसाइटी का जो पार्ट है उसमें we can say that social inequality or social justice even in GS2 can form the part of this manual scavenging। और फिर जो फैक्ट्स हम लोगों ने देखा है जैसे कि CMC ने रिव्यू किया है कि all the unsanitary latrines have been converted into sanitary, 508 districts have been already declared themselves free। Then this act which says that uh, this inhuman practice of manual scavenging is totally banned in India. Swachhata Abhiyan mobile app and Namaste scheme. This is all about the manual scavenging. Next article की तरफ जाते हैं. That is, as I told you, Mojangal Army Yojana. So Mojangal Jami Yojana is actually ओडिशा गवर्नमेंट का एक इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव है। The government has formally come up with this scheme intending to complete the recognition of all the rights under the Scheduled Tribes and other traditional forest dwellers, a recognition of Forest Rights Act. In short, we called it as a Forest Rights Act 2006 in the next 2 years. मतलब आने वाले 2 सालों में जो भी ट्राइबल राइट्स है अंडर दिस फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 के अंतर्गत वो सारे राइट्स उनको दिए जाएंगे in the next 2 years. So what exactly this Forest Rights Act involves? The recognition of community rights, the community forest reserves rights, and community forest resource rights, then the conversion of unsurveyed habitations to forest villages, to the revenue villages. So these are some of the rights. If we go by the fact, in this Forest Rights Act is actually enacted in 2006 and came into effect in 2008. Considered a landmark piece of legislation as it attempts to correct the historical injustices that have been dealt against the forest dweller in a colonial era and independent India. The forest dwellers individual right, remember individual right और जो उनका कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट है उन दोनों को बहाल किया गया है अंडर FRA Act 2006. Okay, so any person, what is individual right? Any person belonging to the ST or the scheduled tribe can claim the rights to live in and cultivate up to 4 hectares if he occupied it and dependent upon it for
December 13, 2005। मतलब अगर कोई शेड्यूल्ड ट्राइब्स का पर्सन है एंड ही कैन क्लेम राइटफुली दैट ही कैन कल्टीवेट 4 हेक्टर, 4 हेक्टर तक वो लैंड को कल्टीवेट कर सकता है, क्योंकि अगर वो प्रूव कर दे कि वो डिपेंडेंट था 2005 दिसंबर से पहले उस लैंड पर। अगर नॉन ट्राइबल पीपल अगर ऐसा क्लेम कर रहा है तो ही हैज टू प्रूव दैट द फैमिलीज रेसिडेंस इन द विसिनिटी ऑफ द फॉरेस्ट फॉर 75 years अप टू द दिसंबर 2005। तो ये इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट का क्लेम है। कम्युनिटी फॉरेस्ट, द एक्ट रिकॉग्नाइजेस द राइट्स ऑफ ग्राम सभा ओवर द फॉरेस्ट लैंड within the village boundaries, seasonal use of landscape and pastoral communities. So these are some of the uses that has been dealt actually कि क्या क्या community forest rights दिए गए हैं। तो rights of gram sabha over the forest land for seasonal use of landscape for pastoral community. This allows the villagers to own the use of dispose of minor forest products। मतलब minor forest products मतलब जो फ्लावर्स कलेक्शन है या फिर लीव्स का कलेक्शन है या फिर रेक्सिन या गम का कलेक्शन है, दीज आर ऑल अंडर द माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, और उनका कलेक्शन यूज और डिस्पोज करना उनको अलाउड है एज अ कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट। राइट टू यूज द ग्रेजिंग लैंड for the pastoral purpose, water bodies, and right to protect and regenerate any community resources, amongst the others, are a community forest right. So this is all about the Forest Rights Act। चलते हैं फिर से उस स्कीम की तरफ। दिस मो जंगल जामी योजना इज under this, the forest rights cells will be constituted at a tehsil and district level with a professional human resources to ensure and assist in effective implementation of this act। मतलब फॉरेस्ट राइट सेल यहाँ पे एस्टेब्लिश किया जाएगा, कहाँ पे, तहसील और डिस्ट्रिक्ट पे, और उसका काम क्या रहेगा कि वो इंश्योर करेगा या असिस्ट करेगा ये एफआरए एक्ट के अंतर्गत जितने भी राइट्स दिए गए हैं फॉरेस्ट ड्वेलर्स और एसपी कम्युनिटी के लिए, उनका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हो जाए। The project would speed up the post rights recognition activities within a prescribed time frame as well। थोड़ा सा फैक्ट्स उड़ीसा के बारे में जान लेते हैं। उड़ीसा इज एट द फोरफ्रंट ऑफ preserving the forest rights of a tribal community। Remember this, it is a home to 62 types of tribes, particularly or including 13 particularly vulnerable tribal groups। We call them as a PVTGs। Okay, 2011 के census says that our state is ranked third in terms of urban population, sorry, tribal population। Tribal population of the states constitutes 22.85% of the total population, so quite a huge number as compared to the other states. So third in the category, 62 types of total tribals, and out of which 13 are particularly vulnerable tribal groups। Now, government wants to ensure that all eligible claimants, primarily single women और जो particularly vulnerable tribal groups है, उनको लैंड टाइटल मिले और रिकॉर्ड करेक्शन जो मिस हैपनिंग्स है रिकॉर्ड में या रिकॉर्ड कीपिंग में, वो 100% क्लियर किया जाए और टाइटल होल्डर को दिया जाए। ये टोटल जो स्कीम है मो जंगल जामी योजना, ये उड़ीसा गवर्नमेंट का फ्लैगशिप स्कीम है, बिकॉज दे आर गोइंग टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट अंडर द फॉरेस्ट राइट एक्ट। चलते हैं तीसरे आर्टिकल की तरफ। ये एडिटोरियल है। इंडिया ने अभी शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का एक जो समिट हुआ है वो समिट कंक्लूड किया है ऑन ट्यूसडे इटसेल्फ। So what is this SCO is, and we know that this is going to be the part of your GSO as an international uh, relations and an international affairs, foreign affairs के लिए ये इम्पोर्टेंट बन जाता है शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये न्यूज में क्या है, एज आई टोल्ड यू दैट SCO काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ द स्टेट्स मीटिंग मार्क द फर्स्ट टाइम इन इंडिया chaired the summit of the regional countries। The first time इंडिया ने ये कमिटी ये ऑर्गेनाइजेशन की जो मीटिंग है वो चेयर किया है और उसको कंक्लूड भी किया है ऑन ट्यूसडे इटसेल्फ। तो थोड़ा सा फैक्ट्स इंडिया और एससीओ के बारे में जान लेते हैं। इंडिया बिकम द पार्ट ऑफ एससीओ इन 2017 in an Astana summit along with an India। You can see India become the full member of this SCO organization along with the Pakistan in 2017।
Joining the originally Eurasian group was important as a member countries making because बहुत सारे positives है इस organization के साथ. It having a third to the global GDP, मतलब global GDP के थर्ड पार्ट एससीओ मेंबर कंट्रीज के पास में होता है. अ फिफ्थ ऑफ द ग्लोबल ट्रेड, अ फिफ्थ ऑफ द ग्लोबल ऑयल रिजर्व एंड अप टू 44% ऑफ नेचुरल गैस रिजर्व. मतलब इकोनॉमिकली और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है इन यूरो एशियन ग्रुप. Focus on regional security and connectivity, as I told you. These are the key areas of India's growth. So SCO gives India an interface with a Central Asian market and resources. Very important. जो भी सेंट्रल एशियन कंट्रीज है जो कि मेंबर्स है शंघाई के, उनका एक्सेस यहाँ से मिल जाता है इंडिया को फॉर इट्स रिसोर्सेज एंड फॉर इट्स इकोनॉमिक ग्रोथ एज वेल. Finally, joining the SCO was a part of India's stated ambitions, multi-alignment or strategic autonomy, while becoming a balancing power in the world. मतलब इंडिया wants to maintain its strategic autonomy और उसके लिए इसका मेंबर बनना खूब बहुत इम्पोर्टेंट है. बिकॉज वी नो दैट अगर एससीओ की मेंबरशिप देखा जाए तो उसमें चाइना भी आता है और उसमें रशिया भी आता है. सो these two are a different block as compared to the US and UK and other western countries. So एक काइंड ऑफ मल्टी अलाइनमेंट सेंटर्स तैयार करने का या मल्टीपोलर वर्ल्ड तैयार करने का जो फॉरेन स्ट्रैटेजी है उसमें ये अप्रोप्रिएट होता है और दैट्स व्हाई स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी विल बी गेट्स अवार्डेड टू इंडिया. अगर देखा जाए ये इवेंट मेजर इवेंट था इन कंपैरिजन और इन एसोसिएशन विद G20. तो G20 समिट होने वाला है उसके साथ में क्योंकि इंडिया ने फर्स्ट टाइम ये समिट चेयर किया है. दैट्स व्हाई इट इज अ मेजर इवेंट. बट देयर आर सर्टेन question marks that has been raised actually in the editorial that India's decision to postpone the SCO summit because of हमें मालूम था हाल ही में मोदी जी यूएस और इजिप्ट की विजिट पे गए थे. तो दैट्स व्हाई एससीओ समिट पोस्टपोन किया गया था. उसके अलावा वर्चुअल समिट किया गया रादर देन फिजिकल समिट. तो वर्चुअल समिट के पीछे भी कुछ रीजंस थे जैसे कि appreciations by China and Pakistan, उनका presence होना इंडिया में, and apart from this the presence of very important Russia, Vladimir Putin का after that mutiny by the Wagner group. So all these things were considered uh, mm, that virtual summit will be the good and that's why India ने virtual summit के लिए opt किया. But उससे थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क क्रिएट हुआ रिगार्डिंग द सीरियसनेस for this whole summit itself. But मेंबर्स जो थे उन्होंने न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन साइन किया है जो टेररिज्म या एक्सट्रीमिज्म के अगेंस्ट कोऑपरेशन के लिए एक ग्रुप क्रिएट किया जाएगा. दैट इज व्हाट दिस डिक्लेरेशन सेज. जॉइंट स्टेटमेंट ऑन रेडिकलाइजेशन एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी एक जॉइंट स्टेटमेंट इस इवेंट के अंतर्गत दिया गया है. But there are certain things that are not sorted actually. कंसेंसस बना नहीं है इंग्लिश एज एन फॉर्मल एससीओ लैंग्वेज. और जो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है एक तो चाइनीज और दूसरी है रशियन. तो इंडिया सेड दैट कि इंग्लिश शुड बी द ऑफिशियल लैंग्वेज बट उसके ऊपर कोई कंसेंसस या एग्रीमेंट बना नहीं है. और उसके अलावा एक प्रॉपर रोड मैप नहीं बन पाया इकोनॉमिक कोऑपरेशन पे, खास करके BRI दैट इज द चाइना's initiative to build the economic corridor in India occupied Pakistan occupied Kashmir, that is POK. So that is a serious security concern for India. और उसके ऊपर भी कुछ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट बन नहीं पाया. थोड़ा सा शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जान लेते हैं. दैट इट इज एन यूरोशियन पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी and a defense organization established by China and Russia in 2001. It is the world's largest regional organization in terms of its geographic scope and population, covering approximately 60% of the area of Eurasia, 40% of the world population, and as of 2021, its combined GDP was around 20% of the global GDP. So quite a huge number. SCO is the successor of Shanghai 5
formed in 1996 between People's Republic of China. मतलब 1996 में जो कंट्रीज थे, जो चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिजिस्तान, and then Federal Russian Federation, Tajikistan. So these are and Central Asian countries. That is what the important for India as an economic point of view, because these are resource-rich countries. In June 2001, the leaders of these nations and Uzbekistan met in Shanghai to announce the new organization with a deeper political and economic cooperation. In June 2017, it expanded to 8 states now with an India and Pakistan. ये 6 के अलावा इंडिया और पाकिस्तान 2017 में एज एन फुल मेंबर इंक्लूड किए गए हैं, और हाल ही में जो न्यू दिल्ली में समिट हुआ है उसमें ईरान एज एन 9th मेंबर ज्वाइन हुआ है. So this is an overall view of SCO. So again, in SCO is a very important organization, as I told you, to create an multi-alignment order. और जैसा कि मैंने कहा कि कनेक्टिविटी और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, रीजनल कनेक्टिविटी और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ये जो रीजनल ब्लॉक है, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये इम्पोर्टेंट बन जाता है बिकॉज ऑफ दीज फैक्ट, दैट इज हाई जीडीपी, ग्लोबल जीडीपी परसेंटेज, global trade percentage, the global oil reserve, and a natural gas reserve. So this is an overall analysis of the editorial along with the articles, that is Mo Jungle Jami Yojana and manual scavenging that has been ended. So I hope ये जो analysis है वो आपको आपकी preparation में help करेगा. If you like the video, do hit the like button and subscribe to the channel. So thank you. We will meet again into the tomorrow for the next analysis. Till then, take care and thank you.